So welcome everybody. Welcome to the Internet Governance Praxis Speaker Series, an initiative by the Internet Society. Recording in progress. In the Internet Society India Mumbai chapter. Born from our passion for blending multi-stakeholder philosophy of Internet governance, this series will introduce the fundamental concepts of Internet governance to the youth, especially those in remote regions of the country. It aims to bridge the gap between the principles and practical application of Internet governance, empowering participants to become proactive contributors to digital economies and active members of the Internet governance ecosystem. Our events, featuring lectures, discussions, and presentations, focus on exploring the practical aspects of Internet governance. We've gathered experts and thought leaders to raise awareness and tackle the challenges, solutions, and implementations related to managing the Internet infrastructure, policies, and regulations. Through the series, we address the interplay between the government, the private sector, and civil society, fostering a comprehensive understanding of Internet governance in practice. Together, we strive to make the Internet a better and more inclusive space for all. We would like to warmly welcome our speakers, Dr. Syed Kazi and Mr. Pratik Pathar, our guests, Gaseous Samdup from International Institute of Culture and Ethics, Honorable in Charge Vice Chancellor of Central Institute of Buddhist Studies, Gracious Tapka Talsang, Administrator Officer Kongchul Rigzin, Dean Student Welfare, Thinley Yongjur, Additional Officer Dr. I.B. Jha, the faculty members, the students, ISOC India Mumbai volunteers, advisors, and everybody else involved. Thank you. Thanks, Nupur. So good morning, everybody. Namaste, and a warm welcome to everybody who is joining us today for the Internet Society India Mumbai's chapters webinar on the topic Introduction to Internet Governance. I am Jusha Gandhi, Vice President at ISOC, and I am your moderator for this session. As Rupur rightly said, through this series, our goal is to bridge the gap between the theoretical concepts of Internet governance and their real-world application. So to discuss this topic further, we are honored to have two special guests with us to delve deeper into the subject of Internet governance. Let me introduce you to our first speaker, Dr. Syed Kazi. Dr. Syed is a seasoned development professional with over 20 years of experience in the field of ICT for development. He has held various roles in India and has undertaken assignments for international agencies. His current focus include ICT environmental and climate change, circular economy in electronics and electrical sector, gender and ICT, digital rights and access. He serves as a director at the Council for Social and Digital Development, CSDD, a research and a policy organization dedicated to the social and digital innovations for sustainable development in India. Dr. Syed holds an MPhil and a PhD from the Center for Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, JNU, at New Delhi in India. Please join me in welcoming Dr. Syed as Kazi for the next 20 minutes with a round of applause. So, should I start? You mean to say, should I start now? Okay, great. So my time starts now, Jusha. All right, thank you. Nupur, I shared the PPT. Would you like to share the PPT from your side, or I can share on the screen from my side? You can share it. I will share it. No. So please don't count my 20 minutes now. Dr. Kazi, you can even take some of my time, so you don't need to worry about that. I know where I am at.
1 second. I think you may have done multiple sessions and all, but every time is a new beginning. Can you see the screen, all of you? Can you share the screen? Yes, we can. Okay, so of course I'm aware of the time that I have, but I will just have 1 or 2 minutes, of course, for formality's sake, 1 minute at least. In the sense that, first of all, thank you, Mumbai ISOC chapter, for inviting me, and also the kind of engagement that we are having today with the Central Institute for Buddhist Studies, if I'm correct, which is based out of Leh-Ladakh. So first of all, Namo Buddhaya, and a good morning to all of you sitting in the auditorium, in the hall that you're sitting there, and especially the dignitaries sitting over there, professors, faculty members, the dean, and if I have heard correctly, Nupur, that I think the vice chancellor or the chancellor's Saab is also here. But my apologies that I don't remember the name. So please forgive me for that. But I'm very delighted and happy that I'm part of you today for the next 40, 50 minutes. And I'm privileged that the Central Institute of Buddhist Studies that is based out of Leh-Ladakh. Of course, I was reading yesterday, मैं पढ़ रहा था कल परसों की आप लोग एग्जैक्टली करते क्या है, कब से शुरू किया है, काफी सालों से शुरू किया है, कैसे शुरू हुआ है, जो वेबसाइट से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, और धन्य हो इंटरनेट को हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इंटरनेट ही हमें पॉसिबल किया है कि हम जाने आपको, आपके इंस्टीट्यूट को, आपकी जगह को जाने, हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं आप लोगों का काम, university courses, studies, and those unique philosophical based studies that you are doing in the institute is, I think, very unique. And पूरी दुनिया को पता है, the whole world knows the Buddhist philosophy, the work, the Lord Buddha, the philosophy around जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं, about the peace, prosperity, shanti, across the world. So I think that is what we know. That is what I am knowing since my childhood, from my education times, and I'm really privileged for that. And also since टुडे मुझे एक जिम्मेदारी दिया गया है कि आप 20 मिनट में जो भी आप कुछ बता सकते हैं इंटरनेट गवर्नेंस क्या चीज है, और is it okay if I speak in English and Hindi both? I'm asking the audience sitting in the auditorium, the faculties, the distinguished guests over there, the students, researchers, is it okay mix of Hindi and English? Or because I am sorry, I don't know any other languages as of now, except my mother tongue I know, but you might not understand my mother tongue. So I'll go by that, if that is okay. Nupur and Pratik, if that is okay, right? Sure, sir. Okay, great. Thank you so much. So मैं अभी शुरू करता हूँ. And I think मैं 1-2 मिनट ले ही लिया हूँ already. तो बेसिकली क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है इंटरनेट से, और इंटरनेट आज के तारीख में everyone we are using internet, and without internet life is nothing nowadays. और इंटरनेट हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो ये सब चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से हम लोग कह सकते हैं. Everyone has their own experience of writing on the internet by using the internet and the impact of internet on our lives. Even in the institute, without internet, how education will also progress or not progress, that we all know very well. So basic understanding of internet, I think we all have. internet क्या चीज है, क्यों जरूरी है जिंदगी में, and how it can affect our life, not affect our life, positively, negatively. I think we all know basic understanding तो सबको है. So यहाँ दो सिचुएशन है. एक तो है जो हम आंखों के सामने जो देखते हैं कि हमारे सामने इंटरनेट है, हमारे सामने एक मोबाइल हमारे पास है, हमारे सामने एक कंप्यूटर का स्क्रीन है,
लैपटॉप का स्क्रीन है, हम पढ़ते हैं, हम एनी टाइम यूज करते हैं, हम सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, शेयर करने के लिए, एवरीथिंग वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ऑलरेडी वी हैव, नो डाउट वी हैव। बट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज दैट इसका जो दूसरा हिस्सा है कि ये क्या चीज है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये हमारे जिंदगी में जो इसमें जो कौन कौन से लोग हैं, संस्थाएं हैं जो पार्टिसिपेट करता है पीछे से, इसको कैसे सप्लाई करते हैं, इसको कैसे हम आप हमारे सिटीजन के सामने लाके देता है इंटरनेट, और इसको मैनेज करने की क्यों जरूरी है, बिकॉज एक साधन है, दिस इज अ रिसोर्स नाउ, इट्स अ ग्लोबल रिसोर्स फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दिस इज अ कलेक्टिव रिसोर्स, ये खाली आपका नहीं है या मेरा नहीं है, ये सबका रिसोर्स है। तो इसको कैसे हम गवर्न कर सकते हैं सबका पार्टिसिपेशन के साथ, ये बहुत बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट इज व्हाट इंटरनेट गवर्नेंस पूरी दुनिया में आज के तारीख में इंटरनेट को कैसे मैनेज किया जा सकता है अच्छे से, उसके लिए ये दुनिया भर में डिस्कशन हो रही है, डिसीजंस ले रहे हैं सरकारें, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज एंड ऑल दोज एजेंसीज कंसर्न। So this is my first slide, as you can see, ये आप लोगों का लद्दाख का पिक्चर है, हालांकि मैं गया नहीं, बात पिक्चर में देख रहा हूँ, इंटरनेट में देख रहा हूँ, और जब भी मुझे मन करता है, मुझे मैंने फॉर एग्जाम्पल गर्मी में मुझे ठंडा महसूस करना है, मैं लद्दाख का पिक्चर देखता हूँ, ताकि बर्फ का पहाड़ का पिक्चर देखता हूँ, ताकि मुझे सुकून मिले, मन को सुकून मिले। तो ये इंटरनेट का धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें ये पॉसिबल किया है। सो नेक्स्ट स्लाइड है। आई थिंक मैं चाहता था एक इंटरेक्टिव करें, हम पूछे कुछ चीजें आप लोगों से और आप लोग कुछ बोले हम, लेकिन मुझे लगता है टाइम की वजह से टू एंड फ्रो विल बी अ चैलेंज, मुझे लगता है। तो मैं पूछना चाहता था, ये कॉमन सा चीजें हैं कि ये क्या है आपके सामने, क्या है स्क्रीन में। तो आप लोग ये जो रिंग रिंग देख रहे हैं, वेब देख रहे हैं, ये जो जाल देख रहे हैं, स्पाइडर का जो जाल की तरह देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज व्हाट internet, the world that is connected today is a network. Internet is a network that is connecting our devices, our tools, our people, our organizations, one institution to another. That is how the internet is all connected. इसके बाद मैं पूछना चाहता था आप लोगों से कि ये क्या पिक्चर है, ये शायद ये पिक्चर है, आप लोग कहते हैं मुझे कि ये पिक्चर ये है कि ये इसी से ही पूरा इंटरनेट का दुनिया चलता है, तो हमारा डेटा कहाँ सेव होता है, हमारा वेब क्या, इंटरनेट क्या चीज है, तो वेब जो है, वेब एड्रेस क्या होता है, हमारा जो सर्वर जो है, हमारा क्या सिस्टम है, आपका डेटा सेंटर क्या है, ये जो पीछे का जो स्ट्रक्चर्स है इंटरनेट को रखने के लिए, मैनेज करने के लिए, बेसिकली दिस होल टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है, ये इंटरनेट ऐसे ही गवर्न पीछे से हो रहा है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डल रहा है, वायरिंग हो रहा है, डेटा सर्व हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये चीजें हैं। तीसरा चीज मैं ये शायद पूछना चाहता था, आई वांटेड टू आस्क यू दैट हाउ इंटरनेट इज कनेक्टेड टू आवर लाइव्स, लाइक वी आर बिल्डिंग ए कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी बना रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आपस में बेच रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वी आर ट्रांजैक्टिंग, वी आर बाइंग एंड सेलिंग, वी आर शेयरिंग मनी, गिविंग मनी, लेंडिंग मनी। सो ऑल दोस थिंग्स दैट इज आई थिंक वी आर डूइंग टुडे, जो हम फिजिकली करते थे 10 साल 20 साल पहले, जो इंटरनेट नहीं था, वो अभी सारा चीजें आज के तारीख में ऑनलाइन हो गया है। सो दैट इज हाउ दो तरह की दुनिया, टू काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, ऑनलाइन वर्ल्ड वर्सेस द फिजिकल वर्ल्ड। और मुझे लगता है अगर फिजिकल वर्ल्ड नहीं भी रहेगा आज के तारीख में, हम वी विल नॉट क्राई और विल नॉट फील सैड एंड विल नॉट फील डिप्रेस्ड, बट अगर ये डिजिटल वर्ल्ड, इंटरनेट वर्ल्ड नहीं रहेगा, आई थिंक हमारे जिंदगी में, आई नो हाउ वी विल रिएक्ट, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, क्यों होगा, क्या नहीं होगा, आई थिंक वी ऑल नो दैट। देन मैं पूछना चाहता था आप लोगों से कि ये पिक्चर देख के आपको क्या लगता है। शायद आप लोग मुझे बोलते हैं तो ये तो पिक्चर बेसिकली इंटरनेट नहीं होने का पिक्चर है, शायद ये शट डाउन का पिक्चर है, ये इंटरनेट नहीं होने का पिक्चर है जो स्विच ऑफ कर दिया होगा किसी हालात में, किसी कंडीशंस में गवर्नमेंट ने, या बिकॉज कुछ चीजों को मैनेज करना है समाज में, जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड को मैनेज करने के लिए।
तो मैं शायद पूछता आप लोगों से कि क्विकली ये क्या है, तो आप लोग बोलते ये शायद ये काला काला आदमी जो है, ब्लैक पर्सन है, ये चुपके से वेरी साइलेंटली ही इज spreading fake news, misinformation. They is spreading the person, which is very common, I think, in our lives today. We have seen. तो मैं पूछता ये क्या, तो ये होता, आप लोग बोलते ये बदमाश आदमी है. This is a very dangerous person. He spreads all the cyber crimes and he snatches our money and does all those cyber crimes and all those kind of people there in our society nowadays behind the screen. मैं पूछता ये क्या, then you would have told me that some people have access to internet, some people doesn't have access to internet, which is called internet divide, which is called digital divide. Then I would have asked you that what is this, you would have told me that this is something related to internet speed. देखने में इंटरनेट है लेकिन स्पीड नहीं है, हम गोल गोल घूमते रहते हैं, हमारा कुछ हम शेयर नहीं कर सकते, अपलोड डाउनलोड नहीं कर सकते. देखने में इंटरनेट है, पैसा हम उसी प्लान में दे रहे हैं, 250 रुपया 300 रुपये, we are spending money but our speed is not according to the requirement. ये क्या होता, ये होता मेल एंड फीमेल वाला इंटरनेट एक्सेस, हाउ मेल एंड मैन एंड वुमन are accessing internet. I would have asked you what is there, you would have told me that this is about artificial intelligence, how the new technology that is in front of us today, how it is creating a different world scenario for us, all about data sharing, all about data management and decision making. जो data की वजह से data ही हमें decision making में help करता है हमें. तो इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, इसको अगर पूछता, then you would have told me this is about how technology is also harming the environment, our climate system, our Himalayas, our countries, our societies, how the technology is affecting our climate conditions and all. I would have asked you, you would have told me this is a picture of a government institution that take decision. This is a symbol of a government जो decision लेता है and takes policies and programs for us, which is good for us. Then I think वो picture जो होता है वो मैं शायद आप लोगों से बातचीत करता. Then उसके बाद में इसमें आता कि इंटरनेट क्या चीज है. Very simple सा thing है, आप लोगों को पता है कि how it's connected to our devices, our mobiles, our network and all, how it is connected to our lives. Then I would have told you that, of course, I think there's a difference between internet and the web. Internet is connecting the devices and the web is the web service that the internet provides to all of us. जो software है, web is a software जो हमें device से connect करता है, हमें आपस में connect करता है. Then ये शायद मैंने I'm going little faster. I'm sorry for that because I have to be obliged of the time. और मुझे लगता है काफी slides है लेकिन pictures ज्यादा हैं. I will just quickly run through. इस स्लाइड का मतलब ये है कि इंटरनेट किसका इंटरनेट, whose internet? Internet is for whom? The question is this. The answer is that internet is for all of us. You, me, sitting on the auditorium, in the institute, जो लोग हैं, students हैं, faculties हैं, हम जो बैठे हैं, इंटरनेट सबका है. इंटरनेट किसी का नहीं है लेकिन सबका है इंटरनेट है. Which means any decisions that has to be taken to make internet just, equitable based, समानता, सबके पहुंच में होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सबका समान बराबर इंटरनेट पहुंचना चाहिए. तो इंटरनेट इज ऑल अबाउट दैट. आई थिंक इंटरनेट सबका है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है. और पॉलिसीज अगर मेरे खराब है इंटरनेट को, वी नीड टू रेज आवर वॉइस आल्सो व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम. Then I think this is another perspective on how today, I think initially I shared internet is all about so much of services, any kind of things that you mentioned, how we communicate, how we share, what kind of service, everything is on the internet. It's on our devices. So this is all about infrastructure, which I mentioned earlier, how internet is governed by an infrastructure setup, जो हम दिखते नहीं है सामने से लेकिन पीछे से ही हमको सपोर्ट कर रहा है. इंटरनेट गेटवे कह लो, आपका ट्रैफिक कह लो, जो सबमरीन केबल्स कह लो, जो तार जो बिछाते हैं, केबल कनेक्शंस, फाइबर कनेक्शन जो बिठा, एवरीथिंग, पोर्ट से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो पूरा एक अपने आप में एक दुनिया है जो इंटरनेट को हमें बैकबोन की तरह हमें सपोर्ट दे रहा है. I would have now the second part. So एक हुआ तो एक जो पहले मैंने बताया कि इंटरनेट क्या चीज है, उसमें सर्विसेज क्या क्या है, हमारे जिंदगी कैसे अफेक्ट है, हम इंटरनेट का हिस्सा कैसे, how we are part of the internet world as of today. So that is one part of the story. The other part of the story is that in this whole internet का दुनिया में, who are the stakeholders, who are the players जो ये डिसाइड करता है, जो इसको
आपस में मिल के इंटरनेट को चला रहा है, दुनिया भर में इंटरनेट चला रहा है, चाहे वो इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, तिब्बत में हो, वर्ल्ड में हो, एनी कंट्रीज में। इट्स गवर्नमेंट है, ये टेक्निकल कम्युनिटी है। टेक्निकल कम्युनिटी जो मान लीजिए जो आईएसओ के चैप्टर है, इंटरनेट सोसाइटी टेक्निकल कम्युनिटी है, इस तरह के चैप्टर्स जो है कम्युनिटी है। और भी बहुत सारी वर्ल्ड में कम्युनिटीज ऐसा है, इंडिया में भी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी का मतलब एनजीओ वाले जो इस फील्ड में काम करते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो है, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे जियो हो, एयरटेल हो, XYZ। So these are all people who are part of this whole responsibility, collective responsibility of governing the internet. इसका मतलब they are the stakeholders, हिस्सेदार है। सब we are part of that. Nobody is unique. Everyone has a role to play in that. Next is that, so it's all about internet पहले में, उसके बाद who are the stakeholders, जो स्टेक होल्डर सब अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद थर्ड है, नंबर 3 है द गवर्नेंस, शासन, हाउ टू गवर्न दैट इंटरनेट। So many stakeholders, but we need to govern so that internet is effective, internet is accountable, internet is for everyone. Internet is very careful of the environment. Internet allows everyone to participate. Internet doesn't stop us unnecessarily. Internet is safe. So all those things, this governance is zaruri hai, शासन zaruri hai. That is how internet has to be governed. Otherwise, एक खुला छोड़ देंगे, कंपनी वाले अलग से अपना डांस दिखाएंगे, they will start dancing everything they want. Government will start dancing in their own way. NGO will dance anyway. So which means we need to have a proper governance structure. जहाँ policies हो, guidelines हो, structures हो, responsibility, accountability fix हो, अगर कुछ गड़बड़ी हो। That is how is governance of the internet is very, very important. So इसमें सारा चीजें मिलके इंटरनेट गवर्नेंस का पिक्चर, जो इंटरनेट गवर्नेंस आता है, इंटरनेट स्टेक होल्डर्स गवर्न करने का, इसी को कहते हैं इंटरनेट गवर्नेंस। पूरी दुनिया भर में, इंडिया में भी इंटरनेट गवर्नेंस की तरफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, पीपल आर वर्किंग ऑन दिस, एनजीओज आर वर्किंग ऑन दिस, even educational institutions are contributing in this. Tomorrow, the Tibetan Institute, Central Institute for Tibetan Studies, can also contribute regarding internet governance situations in Ladakh, any in that context, if any issues comes up. So, as I mentioned earlier, internet governance का मतलब है स्टैंडर्ड बनाने होंगे, रूल्स एंड प्रोसेसेस बनाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पॉलिसीज बनाने होंगे, सिक्योरिटी होना है, राइट्स की बात है, आपका हमारा राइट्स इंटरनेट में होना चाहिए ताकि वायोलेशन ना हो, इकोनॉमिक इश्यूज इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी राइट्स है, कौन किसका क्या है, ओनरशिप किसका होगा, ई कॉमर्स कौन चलाएगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक सम ऑफ द aspects Pratik will share, which I will not get into the details of it, the technical aspects. So this is all about, as I said, it's internet governance is all about policies, programs, decisions, rules, regulations, and so forth, involving so many stakeholders. So जो लोग शामिल हैं, major लोग. So I'll skip this because already I have said, I will skip this, already I have said, I will skip this, already I have said policies, ये सब चीज़, I will skip this. Now I am coming to an aspect कि एक तो है पूरा I think the bigger aspect is governing the internet so that internet is for everyone, internet is safe, secure, internet is infrastructure, internet is properly managed, infrastructure is managed, speed is managed, speed हमसे अच्छे से दिया जाए, safe or secure or everything. Now the question is that internet governance में, जैसे मैंने ऊपर, as I have shown you in the previous slide, there are many issues on internet governance. But all issues may not affect you and me on daily basis. We may not be also concerned. Not necessarily everyone should be concerned on every aspect of even internet governance, because we have our own areas to focus. For the infrastructure part, the technical community will take care of it. The companies will take care of it, and other people will take care of it. For the policy aspect, government will take care of it. Of course, NGOs will participate, people will participate and all. But I think what's more important, when I was thinking as an individual, as a student, as a researcher, as a faculty, I'm sitting. So what are those things that really bothers me, should bother me also on day-to-day basis,
so that I can also participate and I can put my thoughts, I can build my perspective and can make my thoughts very clear and discuss with people and contribute in the better internet governance. So some of the issues that I thought is very regularly comes to us in front of us very often is that number one is this. You must know that in 2023, पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा शटडाउन इंटरनेट शटडाउन हुआ है सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन मेजर शटडाउन नंबर वन वर्ल्ड में नंबर वन शटडाउन इंटरनेट had happened in India. I'm not going to say whether it's right or wrong, good or bad or not, but I am saying just from the perspective that internet shutdown is an internet governance issue, which affects you, it affects me. Ladakh may be internet shutdown hua hai because of certain reasons. Government may have thought for good reasons to maintain security and maintain, all those law and order and things like that. But this is an issue. So the question that should come to us is that whether internet governance ठीक है बहुत जरूरी है. But the point is that क्या इसको minimize कर सकते हैं? क्या internet governance shutdown जो होने का जो डिसीजन लिया जाता है तब वहां तक ना पहुंचे हम लोग क्या उससे पहले कुछ स्टेप्स हम ले सकते थे आपस में बात करके स्टेक होल्डर्स कि इंटरनेट शटडाउन के सिचुएशन में ना पहुंचे बिकॉज अगर फॉर मंथ्स एंड मंथ्स इंटरनेट शटडाउन हैपेंस एंड व्हाट हैपेंस टू आवर लाइफ जस्ट इन मणिपुर एग्जांपल आपको पता है फॉर 1 year the entire state was shut down see the life that has gone so I think we need to talk about the solutions we need to prevent that kind of internet shutdowns as much as possible through discussions and the participation of the stakeholders जो मैंने बताया था stakeholders कौन से लोग थे. So the next issue is in terms of cyber crimes. Crime समाज में होता है. There are crimes in our society. चोरी करता है, कोई मारता है, कोई किल करता है, and all those things. कोई महिलाओं को अत्याचार करता है. Women get threatened and all. But these crimes are happening on the digital world now. And you all आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कुछ कि किस तरह का crime digital दुनिया में हो रहा है. So this is a major issue of internet governance जो हमें affect करता है as a citizen, as a society. तो these are some of the crimes जो आप लोग पढ़ेंगे इंटरनेट में पढ़ रहे हैं जानते हैं तो आप लोग खुद और जाके देख सकते किस तरह के क्राइम अलग अलग तरह की क्राइम निकल के आ रहा है आजकल. एक लेटेस्ट है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला डीप फेक एक शब्द है ये डिक्शनरी ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस का डिक्शनरी अलग से है उसमें ये सब चीजें आपको मिलेंगे. तो डीप फेक इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्राइम दैट इज हैपनिंग नाउ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर. So this is another kind of internet governance issue, the digital divide. कितनों को इंटरनेट मिल रहा है, कितनों को डिवाइस हाथ में है, कितनों को नहीं है, नहीं. So this is a kind of major internet governance issue. For example, in places like Ladakh, जहाँ connectivity का major issue है, हो सकता है remote areas, हिमालयन लोगों में connectivity का डेटा ही नहीं है हमारे पास. हिमालयन लोगों के इंटरनेट का क्या एक्सेस है डिवाइस है, तो डिजिटल डिवाइड वाली बात है. So इसमें digital divide का कुछ data statistics है. I think the PPT can be, if you can access the PPT or you can look at yourself, what is the degree of digital divide in our country? In Leh-Ladakh also you need to find out what is the digital divide. Then again, men versus women, as I mentioned earlier, I think we need to find out this is a major internet governance issue. 50% अगर society का population women है, तो उनका कितना participation है? That is another things. So digital divide is all about access to technology, internet access, digital literacy, skills and all. So we all know that this is a major issue of internet governance and it will continue to be a major issue because every day there is a new technology coming up, new software coming up. So हम तो digital illiterate बनते जा रहे हैं, आता जा रहा हम बनते जा हम सीख रहे हैं. So this system thinks is not going to end. Different kind of digital divide is also emerging. The another concern of internet governance is cyber frauds. बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, पैसा लेके जा रहा है. आजकल पॉकेट मार नहीं, पॉकेट मार जो होता बस में पहले होता था. आई थिंक पिक पॉकेटर्स आर नॉट देयर नाउ. दिस डिजिटल पॉकेटर्स, पिक पॉकेटर्स हैपनिंग नाउ. This is a major issue, which means that our financial participation in the internet world is not safe. In every day, in my office, there are many people who got scammed. My the other colleague 2 days back, she lost 90,000 rupees the other day because she got scammed because एक instant message आया, उसमें click किया, पैसा निकल गया. So how we can participate in the digital world if you're not safe also, safe with the internet, with the business and transactions. So the another issue is that artificial intelligence जो आया है, इसका good side है, bad side है. This is a major issue of internet governance. Please read it in the when you get time. We'll get to understand more.
fake news, misinformation. I think we all know किस तरह के parallel world is happening in the internet. And everyone is becoming a reporter, everyone is becoming an expert on the internet nowadays. कुछ अलग में, we just for the getting likes and all, videos बना के कुछ भी फैल रहा है, send कर रहा है. I think this is something major challenge for us in this whole internet governance ecosystem. Then another point is internet culture. What kind of culture is emerging on the internet? Everyone is making memes, everyone is making some kind of diagrams, some kind of, messages, some kind of prototypes, images that we are making. What kind of culture of internet we are making? Some TikToks are there and all those things. So this is also a concern, how internet culture is also being developed, whether this internet culture is good or bad. For both sides we have. So we need to also think around this, what kind of internet culture we are having nowadays. Another important aspect is, as I mentioned earlier, environment aspect. हम लोग जितना यूज कर रहे हैं, क्या हम सेफली यूज कर रहे हैं, मिनिमल यूज कर रहे हैं हम इंटरनेट को. मान फॉर वन स्मॉल एग्जांपल, जितना भी आप अपने फाइल को डिजाइन करेंगे, हैवी डिजाइन करके भेजेंगे लोगों को खुश करने के लिए, मैं बहुत ब्यूटीफुल करता हूँ, डिजाइन डालता हूँ, रंग डालता हूँ अपने फाइल में, डॉक्यूमेंट में. आप जितना ट्रांसफर करेंगे इंटरनेट से, मेल से, उतना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगा हर फाइल में. तो ये सिंपल स्टेप, कैन वी बी कॉन्शियस कि हम अपना फाइल एकदम सिंपल रखेंगे, विदाउट डिजाइनिंग, कलरिंग ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहा है कंज्यूम, उसको हम मिनिमाइज करें. This is one simplest example that is should be concerning us. That is what I wanted to share. ये आप देख सकते हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, हम लैपटॉप यूज करते हैं, महीने में, साल में कितना जा रहा है दुनिया में, एनवायरनमेंट में जा रहा है. This is another important thing that I was thinking myself कि आज के तारीख में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, वो आपको पता है वो फिजिकली नहीं हो रहा, डिजिटल में हो रहा, इंटरनेट के दुनिया में हो रहा. This should concern us. This should concern us. The conflicts is happening on the internet, on the digital world, and this is a major issue of internet governance. And मुझे लगता है internet governance में ये issues को और भी ज्यादा लाने की जरूरत है, जो मुझे नहीं लगता अभी इतना इस पर फोकस कर रहे हैं. लेकिन ये बहुत, I think it's an important issue. How conflicts is happening on the internet, and what should be done to prevent that? Whose responsibility is that? Prevent conflicts on the internet. So I think that is, I think, the picture that I wanted to give, the issues that is bothers us. I think there are more issues I think each one of us will face, each one of us are facing, but I think we will, as we progress, we'll get to know that. But this particular slide is about how you and me can participate and contribute in better internet governance, जो कि crime ना हो, conflict कम हो, fake news वाला ना फैले, हमारा freedom of speech को घटे ना, internet shutdown ना हो, हमारा इंटरनेट स्पीड अच्छे से स्पीड वाला हमें इंटरनेट मिले, हम इस तरह का चीजें, इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिटिंग ऑन द ऑडिटोरियम एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन आवर, how we can make contribution in that. We can participate in consultations, discussions, forums, बहुत सारे हैं इस तरह का चीजें हैं. For example, in Central Institute for Tibetan Studies, we can have an internet society, kind of a society हम डिस्कस कर सकते हैं. एक फोरम हो सकता है, स्टूडेंट्स का फोरम हो सकता है जो आपस में बात कर सकें. तो those kind of arrangement माहौल को बनाना पड़ेगा if you're really interested to make your internet better and safe for everyone. So ये पिक्चर में आप लोगों के इंस्टीट्यूट का पिक्चर लिया है. I was so amazed to see the picture, and I think, I'm sorry I cannot go, but I'm enjoying the picture on the internet. So now I'm just finishing now. My slides are getting now finishing. So this is something that came to my mind कि as an institute, as an university campus, what should bother you? Because internet governance जो दुनिया में है, बहुत बड़ा issues है. इंडिया एक कंट्री में भी एक इशू हो सकता है, एक स्टेट में भी इशू हो सकता है, लेकिन एक कैंपस के अंदर भी, विद इन अ कैंपस, what could be those internet governance aspects, areas that I think should be important for us to also even to understand. For example, क्या internet policies guidelines हमारा क्या है within the campus, whether those policies are safe, our data is safe, our secured and all. So those, so that there is प्रॉपर एक माहौल इंटरनेट कल्चर हमारे कैंपस में हो. से दूसरा हो सकता है हमारा जो स्किल्स, बहुत सारे हजारों बच्चे होते हैं इंटरनेट हमारे कैंपस में, सबके पास स्किल्स नहीं हो सकता.
कि हम internet campus is also enabling everyone to have the proper skills, safe skills, secure skills to go on internet. उसके बाद है can also we have an internet governance provision कि आपस में जो issues हो सकता है faculties के बीच में, students के बीच में कुछ issue हो सकता है, how do we communicate with proper processes and system in place. So I think within a campus also there are many issues. Probably we can also make our campus better internet governed. उसमें लिए बहुत सारे issues होंगे, which I am sure the administration, the university authorities are also taking right steps, and also through stakeholders discussions within the university also, these issues can be sorted out. उसके बाद, and I think finally मैंने सोचा कि मान लो पूरा दुनिया जो है, I think everyone is focusing on infrastructure, network, मेरा speed, मेरा bandwidth, मेरा file, मेरा document, which is fine. Government policy बना रहे हैं, government regulations बना रहे हैं, which is everything is fine. I have no problem. But personally, I have problem कि जब तक कोई भी चीज दुनिया में आप religiously, philosophically नहीं सोचेंगे, ये कभी सुकून नहीं मिलेगा. आप देखिएगा आज के तारीख में लोग सुकून के लिए पहाड़ जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, बर्फ में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज यू नीड पीस एट द एंड ऑफ द डे, यू नीड हैप्पीनेस. तो इसका मतलब क्या है? जब कोई चीज गवर्न करने का होता है, एक शासन एक कंट्री को भी गवर्न करते हैं, वी गवर्न ए कंट्री. व्हेन वी से कंट्री इज गवर्न also, which means that क्या वो country is philosophically bent mind है, क्या वो religiously कुछ चीजें देखता है, philosophically देखता है, ताकि there is permanent peace, relief, security. लॉर्ड बुद्धा के जो principles है फॉलो करते हैं, तो तभी जाके permanent आपको happiness आएगा. उसी तरह से इंटरनेट जो गवर्नेंस है, बिकॉज गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्या हम फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट गवर्नेंस में? अगर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज पॉलिसीज तो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, कोई भगवान हम नहीं बोल रहा है पॉलिसीज आप बना, इंसान बनाता है. अगर इंसान गवर्नमेंट में इंसानी बैठता है, पॉलिसीज बनाता है, कैन वी थिंक ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स व्हिच कैन बी अप्लाइड आल्सो इन गवर्निंग दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, guidelines and policies, which is very, very important. Personally, I feel this aspect should be very, very covered and also researched also very, very importantly. So this is something that I wanted to share. Finally, as an individual, as I said, as an individual app, as an individual, as an individual, what should bother me, what should concern me on internet governance? कि क्या मेरा digital rights safe, secured है? When I say digital rights, it cannot be limited. We also have a digital responsibility. अनाप शनाप का चीज़ हम spread ना करें, no. Those things are very important. Online safety, fairness, equality, affordable internet है कि नहीं, cost effective है या नहीं. So इस तरह की चीजें हमको ध्यान में रखना होगा. Internet as an individual, if I want to contribute, if I want to be conscious of कि I am a real internet citizen, a net citizen, I have to be very, very concerned about that. Finally, find this, I am saying this is final. I am not going to use any more slides. As an individual, again, yourself, as a faculty, you can participate. There is the Internet Governance Forum. It's a global body here. You can become a member. You can participate in this. How you can participate, please go and check online in this platform. There's an Asia Pacific Regional Internet Governance Forum here. So regional level में है. India Internet Governance Forum है. आप इसमें जाके देख सकते हैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग. ये एक चीज है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि आई एम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, सो वी हैव आल्सो इनिशिएटेड समथिंग लास्ट ईयर. आल्सो वी आर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन दैट बिकॉज वी हैव 8 states here. We wanted to focus on the important issue that is affecting internet governance in northeastern region. And finally, this is nothing but some symbolic pictures that I thought of just sticking your minds. And with this, I'm ending my presentation, my sharing with you, and I think I could share certain perspective. But finally, I think this is a constant process. Internet is going to be going forward, expanding, and more people, young generations are joining the internet world. And I think we need to be conscious. We need to be critical. जो सामने दिखता है, वो may not be real. जो नहीं दिखता है, that we need to focus more and be conscious about our existence. Thank you so much. And I look forward to Pratik's presentations and, of course, any questions and answers that may follow from after this. Thank you so much.
Thank you so much, Dr. Sai. The presentation was really insightful. आपने जिस तरीके से पूरा presentation किया है, very, very helpful and helps us understand internet governance and made it more simpler for us. Thank you. I would like to introduce our second speaker for today, Mr. Pratik Pathak. He is the founder, president, and volunteer at ISOC India Mumbai chapter. Currently, he works as a business strategy analyst at Chairman's office at Percept Group, and he is the promoter of also this renowned Sunburn Festival. He also runs Heteropia Media Entertainment and Private Limited. Pratik is a former government consultant and a legal academic. Having consulted the Government of India, Government of Haryana, Delhi, Maharashtra on their technology and higher education project, he has also taught cyber law at Jindal Global Law School and public policy at University of Petroleum Energy Studies. As the internet governance consultant, Pratik has been invited to speak in New York, Singapore, Kathmandu, Dubai, Montreal, where he is engaged with government officials and stakeholders in the internet governance ecosystem. Please welcome Mr. Pratik Pathak with a round of applause. Thank you. Pratik, over to you. Thank you, Juisha, for that kind introduction. So we'll start, just share my slides. So I'm going to be a bit mindful of time here. Anyways, Dr. Kazi ने एक बहुत ही अच्छा काम किया. उन्होंने काफ़ी elaborate discussion किया है internet governance के बारे में. And one thing जो हमारे students and faculty members Dr. Kazi के session से ले सकते हैं कि वो internet governance के कौन से issues हैं और वो issues पे university क्या कर सकता है, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी हमें thinking points दिए. So meanwhile, as I start, I will be speaking in bit of Hindi as well as English. मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी हिंदी समझ लेंगे कि मैं उतना अच्छा हिंदी बोल नहीं पाऊँगा, बट मैं तो भी हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा. और मैं ये सेशन में मैं एक आपको थोड़ा टेक्निकल और एक यूथ का पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ इंटरनेट गवर्नेंस का. इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा. तो जैसे जिगमित जिनसे मैं बात करता रहता हूँ वो बोलते हैं कि हमारे इधर वी स्टार्ट विद अ गुड मॉर्निंग या नमस्ते. तो मैं आपको जूले आई थिंक बोलते, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया रहेगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, बट जूले आपको बोल के मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ ये सेशन अब इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में. तो जब हम इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में काफ़ी स्टोरीज हैं और काफ़ी पैराबल्स हैं. तो देयर इज़ दिस वन फेमस पैराबल जो कि पाली कैनॉन ऑफ थेरवाड़ा बुद्धिज्म में एक स्टोरी है. एंड दिस स्टोरी इज बेसिकली फाउंड इन उडाना. इट इज़ द स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट. तो ये स्टोरी में क्या होता है कि 6 people who are विजुअली डिफरेंट और विजुअली चैलेंज्ड, उनको एक किंग एलिफेंट के सामने खड़ा करता है और बोलते हैं कि आप इस एलिफेंट को डिस्क्राइब कीजिए. और होता क्या है कि ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, बिकॉज वो पूरा एलिफेंट देख नहीं सकते, वो एलिफेंट का जो पार्ट पे हाथ लगाते हैं उनको लगता है वही एलिफेंट होता है पूरा. तो फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक जन ने एलिफेंट के पूंछ पे हाथ लगाया तो उनको लगता है कि एक एलिफेंट एक रोप होता है. किसी ने एलिफेंट के पैरों पे हाथ लगाया और उसको लगता है कि एलिफेंट एक वॉल होता है. तो ऐसा करके 6 बंदे, बिकॉज दे आर विजुअली चैलेंज्ड एंड दे कांट सी, ईच ऑफ देम थिंक्स ऑफ एलिफेंट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, बट समवन हु कैन सी essentially knows that these are just 6 different parts of an elephant and the elephant is altogether different. तो ये स्टोरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी हमें गवर्नेंस और लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देती है. ये जो बुद्धिस्ट स्टोरी है उड़ान लिटरेचर में आपको मिलेगा, उड़ान बुक में थेरवाड़ा बुद्धिज्म के पाली कैनन में, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देती है हमें. एक ये होता है कि वी माइट नॉट हैव कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी. हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है रियलिटी का वो हमारा ही पर्सपेक्टिव है उस रियलिटी को लेके, वो एक्चुअल में पूरी रियलिटी हो नहीं सकती. सो वी ऑलवेज विल हैव अ पार्शियल परसेप्शन ऑफ रियलिटी.
The second thing which this story also tells us is it is very difficult, probably only for God or someone who is having a look at all these perspectives, to figure out what is the actual reality. तो फिर हम जैसे नॉर्मल इंसान जो कि एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, हमें कैसे समझे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है? तो इसका भी आंसर बुद्धिस्ट लिटरेचर में दे दिया जाता है. दे टॉक अबाउट कंपेनियनशिप, एम्पैथी एंड इंटरडिपेंडेंस. वो कहते हैं कि अगर हम भले एक इंसान वो पूरा एलिफेंट ना परसीव कर पाए, बट अगर हम 6 जन, ये जो 6 विजुअली चैलेंज हमारे दोस्त होते हैं स्टोरी में, अगर ये एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव पे डिस्कस करके कंसेंसस बनाए, तो शायद से ये परसीव कर लेंगे कि एक एलिफेंट क्या होता है. तो यही सिमिलर स्टोरी हम इंटरनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारे जैसे आईसॉक चैप्टर बैठे हैं, हम अभी आप ये जो कॉल पे वॉलंटियर्स हैं, सम ऑफ यू आर बेस्ड देयर इन लद्दाख, लेह लद्दाख. डॉक्टर काजी जी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. Nupur is joining us from Canada. Nandita is also joining us from Toronto. Juisha and me are joining from Mumbai. So we are all sitting at different places. And हमारे हिसाब से we think of internet governance from our own perspective. But what this story, Buddhism story, kind of tells us is we can all talk to each other, be open to each other's perspectives, and maybe then we will form a uniform picture of what internet governance actually is. तो ये story का importance है. तो अब क्या हो गया है? अब ये हो रहा है रोल ऑफ इंटरनेट. तो अब क्या था कि पुराने जमाने में हम जैसे बुक्स पढ़ते थे, या हम लोगों से बात करने के लिए पोस्ट कार्ड लिखते थे, या हम में अगर टाइम देखना होता था तो हम घड़ी देखते थे. बट अब इंटरनेट से क्या हो गया है कि ये सब चीज़ें ऑल ओवर द इंटरनेट हो सकती है. तो अगर अब आपको नॉलेज चाहिए, तो पुराने ज़माने में जैसे आप बुक्स पढ़ते थे, अब आप इंटरनेट पे जाके नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं. पुराने ज़माने में आप पोस्ट कार्ड लिखते लिखते थे, अब आप ईमेल कर सकते हैं. अभी के ज़माने में आप इवन कैश यूज़ कर सकते थे ट्रांजैक्शंस के लिए, बट आप अब इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. तो ये इंटरनेट एज अ मीडियम बेसिकली बना है बिकॉज ऑल ऑफ अस कैन टॉक टू ईच अदर एंड आर ओपन टू वर्किंग विद ईच अदर एंड आर ओपन टू अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स पर्सपेक्टिव. तो यही अब इंटरनेट हो रहा है. बट इसके बाद अगला क्वेश्चन ये होता है कि इंटरनेट चलता कैसे. तो हमने आई जस्ट स्टार्टेड माई लेक्चर फर्स्ट विद टेलिंग यू दैट ऑल ऑफ अस विल हैव अ लिमिटेड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी, और हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा ताकि हम एक वो पूरी होल पिक्चर, यानी कि पूरा होल एलिफेंट समझे. इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा. और अब हम एक दूसरे का साथ कैसे दे, तो उसके लिए इंटरनेट एक माध्यम बन गया है. पहले बुक्स होते थे, पोस्ट कार्ड होते थे, बैंक होता था ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बट अब इंटरनेट ये सब चीज़ें कर रहा है. तो नाउ वी हैव इंटरनेट डूइंग इट. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि ठीक है भाई, ये इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये चलता कैसा है? तो एक सिंपल वर्ड में, ऑब्वियसली इसमें भी लिटरेचर है. तो जैसे आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हो जाते हैं, या जैसे आपका बुद्धिज्म में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, आप जानते रहेंगे ये सब, या जैसे इवन हिंदुइज्म होते हैं, उनके भी काफ़ी लिटरेचर होता है. वैसे इंटरनेट खुद एक लिटरेचर है इन सम एस्पेक्ट. तो ऑल्दो एक बहुत ही डीप लिटरेचर है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, एंड वी कैन डिस्कस दैट सेपरेटली. कभी मैं आपको लिंक्स फॉरवर्ड कर सकता हूँ. बट इन शॉर्ट, थिंक ऑफ दिस लाइक अ पोस्ट कार्ड, कि जब भी आप वेब पेज ब्राउज करते हो या अपने दोस्तों के साथ चैट करते हो, तो आपका फोन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो रहा है. तो जब भी जैसे आपको 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 जब एक पोस्ट कार्ड भेजना होता है, तो आपको एक सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो पोस्ट कार्ड लिख रहा है जिसको आपको भेजना है, प्लस वो कंटेंट, आपको तीनों का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है. सिमिलरली इंटरनेट में भी ये 3 चीज होती है. द ओनली थिंग इज, आप जब किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हो या जब कोई वेबसाइट पे जाते हो, तो वो जो रिसीवर एड्रेस होता है वो नंबर्स में, एक कोड में सेव किया रहता है, जो कि डोमेन नेम सिस्टम यानी टेक्निकल पर्सन को समझता है. इंसानों के लिए वो एक नाम रहता है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हियर कि हर एक इंडिविजुअल, जैसे आपका एक नाम आपको आइडेंटिफाई करता है या आपका फोन नंबर आपको आइडेंटिफाई करता है, वैसे एक आईपी एड्रेस नाम की चीज होती है जो हर डिवाइस को एड्रेस आइडेंटिफाई करता है. और इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन होता है, इट इज अबाउट 2 डिवाइसेस टॉकिंग टू ईच अदर, विच मीन्स कि हर एक का आईपी एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस आपके दूसरे आईपी एड्रेस से बात करता है. तो इसमें यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फोन है और आपके पास एक लैपटॉप है, तो ये फोन और लैपटॉप भले ही आपके हैं, बट इंटरनेट में ये 2 जनों के हैं. तो वो फोन का खुद का भी आईपी एड्रेस रहेगा, प्लस वो लैपटॉप का खुद का भी आईपी एड्रेस रहेगा. सो ये जो
एड्रेस होता है, जैसे आप वेबसाइट पे देखते हैं तो ये यूआरएल आता है, जैसे यहाँ हमने लिखा है https.ican.org। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ican.org, ये हम जैसे नॉर्मल इंसान पढ़ते हैं, बट आईपी एड्रेस में ये जो नीचे लिखा गया है 192.0.43.7, ये उसका एक्चुअल नाम इंटरनेट पे होता है। तो आप सब यही समझिए कि जितने भी लोग, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं नाम लेके, तो ये नाम की जगह इंटरनेट में एक डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं आईपी एड्रेस लेके। और जैसे हमारे बीच में एक लैंग्वेज होती है जिससे हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो इंटरनेट में भी एक वो लैंग्वेज होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अब अगर हमारे पास ये डोमेन नेम सिस्टम ना रहा तो क्या हुआ? तो जैसे अगर हमने बताया आपको कि हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, ये सब आईपी एड्रेसेस एक डेटाबेस में यानी कि एक सुरक्षित जगह सेव किए जाते हैं। और बिकॉज हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है ओवर द इंटरनेट। बट अब इसमें अगला चीज आप ये सोचेंगे कि क्या हो गया अगर किसी का एड्रेस घूम गया, तो इसका किसी कोई आईपी एड्रेस घूम गया तो क्या हो जाएगा, नहीं मिला तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, इफ एनी आईपी एड्रेस इज लॉस्ट, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। इट इज अ सिंपल थिंग, जैसे अगर आप एज एन इंसान, आपका अगर नाम, आपको अपना नाम भूल गए आप, या आप अपना फोन नंबर भूल गए, तो बहुत डिफिकल्ट होगा किसी भी और इंसान को आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आपको बैंक को आपको कम्युनिकेट करने के लिए, रीच आउट करने के लिए। तो सिमिलरली ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये सब इंटरनेट में डोमेन नेम सिस्टम में सेव होते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईकैन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स अथॉरिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके ये सब एड्रेसेस मैनेज करता है। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी डिवाइसेज है, अब जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन अराउंड इस वर्ल्ड में अराउंड 100 करोड़ के ऊपर तो लोग हैं, 100 करोड़ में भी डिवाइसेस 100 करोड़ से भी ज्यादा है। अभी हर डिवाइस का एड्रेस एक जगह सेव रखना, ये पूरी चीज आईकैन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करती है। और ये जो इंटरनेट गवर्नेंस इकोसिस्टम है, मैं आपको डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि इंटरनेट गवर्नेंस क्या होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर काजी ने कवर किया है। और जो इंटरनेट गवर्नेंस इकोसिस्टम है ये बहुत ही ब्रॉड है। तो इंटरनेट, बिकॉज बहुत लोग इससे अफेक्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं जब एक इंटरनेट रिलेटेड पॉलिसी बनती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगी, वो आर अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट इकोसिस्टम। इसमें अगर आप देखेंगे एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में वाले सेक्शन में यूनिवर्सिटीज भी आती है। तो इवन हमारा जो नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क जो है इंडिया का, जैसे ज्ञान और ये सब, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में आपके यूनिवर्सिटीज आते हैं, प्लस आपके इंटरनेट सोसाइटी चैप्टर्स भी आते हैं। तो ये ओवरऑल इंटरनेट इकोसिस्टम में आईसॉक चैप्टर्स जो होते हैं, ये एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, ये लोगों को हेल्प करते हैं हाउ टू यूज द इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरनेट सोसाइटी जो संस्था से हम बात कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग। तो जो भी इंटरनेट रिलेटेड रेगुलेशंस बनते हैं, लॉ बनते हैं, उसमें एक बार हमसे भी हमारा पर्सपेक्टिव पूछा जाता है कि इसमें आपका पर्सपेक्टिव क्या है, और उस हिसाब से लॉ बनता है। तो इंटरनेट सोसाइटी यहाँ रोल में आता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ आई विल जस्ट फॉर द लैक ऑफ टाइम, थोड़े आई विल हाईलाइट एन इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस जो आप लोग के लिए एप्लीकेबल है और जहां आईसॉक और आईकैन ने काम किया हुआ है। तो वन वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी हमें जो मिली है वो नेपाल में मिली है। तो नेपाल में क्या हुआ, एक स्कूल था, वहां बच्चों को इंटरनेट नहीं मिल रहा था। बिकॉज उनको इंटरनेट नहीं मिल रहा था तो वो ऑब्वियसली अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो ये बच्चों ने क्या किया, इन्होंने खुद का ही इंटरनेट बना लिया। तो ये गए नहीं किधर एयरटेल जियो किसी के पास, वो बच्चों ने, उनके टीचरों ने मिलके खुद का ही इंटरनेट बना लिया। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम कम्युनिटी नेटवर्क बोलते हैं, विच मीन्स एक कम्युनिटी खुद का ही इंटरनेट बना ले पूरा। तो नेपाल में क्या हुआ, खुमजुंग स्कूल जो है, यानी कि छोटे बच्चे थे उस स्कूल में, और खुमजुंग स्कूल ऑल्सो एज अ यूनिवर्सिटी, वहां दे बिल्ट देयर ओन इंटरनेट। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव जहां दे वर्कड विद द लोकल आईसॉक चैप्टर। उनको आईसॉक ने रिसोर्सेज और सहायता दी, स्कूल और यूनिवर्सिटी ने भी खुद के रिसोर्सेज और सहायता लगाई, बट इवेंचुअली दे वर एबल टू बिल्ड देयर ओन इंटरनेट। सो दिस इज व्हाट दे, ये चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इट इज द हाईएस्ट इंटरनेट कनेक्टेड रीजन इन द वर्ल्ड।
एंड इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये खुमजुंग स्कूल है नेपाल में, इधर आईसॉक ने काम किया हुआ है। फ्यूचर क्या हो रहा है इंटरनेट का, तो दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू कवर। अभी भी जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आप हमेशा, आप कोई भी वेबसाइट का आप ये देखिए लिंक, तो वो हमेशा .com होता है। तो जैसे अगर आप लोग अमेजोन जाए, फ्लिपकार्ट जाए, तो इट इज amazon.com या flipkart.com। या अगर कोई यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो उधर .edu रहता है। तो जनरली जितने भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स देखेंगे वो आइदर .com या .edu ही रहते हैं, या ऐसे ही थोड़े वेरिएशंस में होते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हो जाएगी तो वो .in हो जाएगी। बट अब इंटरनेट बदल रहा है। अब इंटरनेट कैसे बदल रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप सिर्फ .in और कंट्री वाइज टॉप लेवल डोमेन नेम नहीं रख सकते। आप .asia जैसा डोमेन नेम, कॉन्टिनेंट वाइज भी डोमेन नेम्स बन रहे हैं। ये बहुत क्रिटिकल है कुछ कुछ जगहों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते रहेंगे यूरोपियन यूनियन, ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है जो साथ में आ गया। वहाँ इंडिविजुअल कंट्रीज मैटर नहीं कर रही है, द कॉन्टिनेंट एज अ होल इज टेकिंग डिसीजंस। तो वहाँ ऐसे डोमेन नेम्स अब बन रहे हैं। मोर इंटरेस्टिंगली, अब आपके जो डोमेन नेम्स है ये आपके लोकल लैंग्वेज में भी रह सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ .in आप .भारत रख सकते हैं, या आप भारत को बोती स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एरिया है जहाँ आपका इंस्टीट्यूट सोच सकता है कि हाउ कैन वी इंश्योर दैट द डोमेन नेम, यानी कि जो .com ऑन द राइट ऑफ द डॉट, ये वो लोकल लैंग्वेज में रहे। क्योंकि द मोमेंट आपके इंटरनेट के एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस आज तक इंग्लिश में ही थे, बट अगर ये लोकल लैंग्वेजेस में आ गए तो देन आप एक ट्रूली मल्टीलिंगुअल इंटरनेट बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो लिटरेचर है, जो फिलहाल सर्च इंजन गूगल और इसमें नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग आपके नॉलेज और आपके लिटरेचर को पढ़ नहीं पा रहे हैं, द मोमेंट आप इसे अपने लैंग्वेज में बनाए तो ज्यादा लोग उसे पढ़ पाएंगे और ज्यादा लोग उसे रीच कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 3-4 प्रकार ऑफ लैंग्वेजेस में आपको डोमेन नेम दिख रहा है। अब नए नए टॉप लेवल डोमेन नेम भी आ रहे हैं। तो पहले .com होता था, .edu होता था, .in होता था, या फिर उनको हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में करते थे। बट अगर आपका पैशन फोटोग्राफी है तो आप एक .फोटोग्राफी भी डोमेन नेम खरीद सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज हमने की है कि अर्लियर डोमेन नेम्स जो थे हमारे, वो .com या .edu ऐसे 2 या 3 लेटर में होते थे। अब इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, सो यू कैन हैव मच बिगर कैरेक्टर्स। तो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव एंड नाउ एंडिंग दिस अप, मैं सिर्फ एक थोड़ा क्विक समरी लेके आपको नेक्स्ट स्टेप्स बोलने वाला हूँ। हमने ये समझा 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट के पैराबल फ्रॉम थेरवाड़ा बुद्धिज्म से, कि हमारी सोच लिमिटेड रह सकती है एंड वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ताकि हमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी आए। ये डिपेंडेंस हम कैसे बनाए? तो पहले हम बुक्स करते थे, हम खत लिखते थे, हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते थे, बट अब इंटरनेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको आपके रियलिटी को पूरा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। उसके बाद हमने समझा कि इंटरनेट बेसिकली आपके डोमेन नेम सिस्टम्स को डील करता है। सो फॉर एनी 2 devices to talk on internet, each of them has to be have an IP address and has to have a domain name, and all these IP addresses and domain names are being managed by an organization called as ICANN। मैंने फिर आपको इंटरनेट गवर्नेंस इकोसिस्टम दिखाया यहाँ, और बताया कि कैसे आप और हम भी इस इकोसिस्टम के पार्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूजर्स, आप एक हमें एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, और वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन समवेयर वर्क ऑन लोकल, नेशनल एंड रीजनल पॉलिसी ऑफ इंटरनेट। उसके बाद आपको मैंने 2 इंटरेस्टिंग केसेस बताए जहां इंटरनेट यूज हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको ये नेपाल का एक केस बताया, खुमजुंग स्कूल का, कि वहाँ बच्चों ने और यूनिवर्सिटी के बच्चों ने खुद से ही अपना इंटरनेट बनाया आईसॉक और लोकल गवर्नमेंट की सहायता से। सो उन्हें फिर किसी एयरटेल जियो की जरूरत नहीं पड़ी, और इससे उन्होंने अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैंने आपको बताई। और मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि इंटरनेट का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। तो फ्यूचर ये हो रहा है कि आप अपना डोमेन नेम अपने खुद की भाषा में ले सकते हैं, आप अपने पैशन के हिसाब से अपना डोमेन नेम ले सकते हो, और अब आपके डोमेन नेम कैन बी मोर देन 3 or 4 कैरेक्टर्स। सो दिस इज अ समरी ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। If you are more interested to know as a youth कि how you can participate in internet governance ecosystem, हमारा एक इंडिया स्कूल ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप आपके लोकल आईसॉक चैप्टर्स हैं दिल्ली, मुंबई, यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको और कोई इसमें जानकारी चाहिए रहेगा तो जिगमित जी वहाँ हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू हर एंड वी कैन ऑलवेज मेक श्योर कि आपको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। सॉरी ऑर्गेनाइजर्स, थोड़ा वी हैव ओवरशूट द टाइम हियर, बट विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज माय सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, Prateek, for the session. We've learned a lot from you, especially with the last part about the domain name. Very, very interesting.
Okay, so we'll quickly open the floor for a question and answer session. Jigmet, does somebody have a question from the audience there? If not, we have I don't think so that there is any people questions from the audience. Okay, so we have one question. questions right now. We have a few questions from the webinar form which was sent. It's for Pratik and Dr. Syed. What do you think are the implications for setting global guidelines in the internet governance ecosystem for the next billion netizens in the Asia Pacific region? So just a minute, Julisha will also check whether we have the time for questions or not. We'll definitely take this question up first, but then eventually we'll check whether we have the time for questions or not. But Dr. Kazi, do you want to go on this or should I go for this question? Yeah, please go, Pratik. Okay. So what we personally, Hindi में बोलना पड़ेगा. So I'll speak in Hindi. So what is next for 1 billion citizens? जिन्हें इंग्लिश आती है, they are already now connected on the internet. जिन्हें पैशन है एक पर्टिकुलर जो कंट्री के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल .in या ये सब चीजें, दे आर ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट. अब जो अगले 1 बिलियन है आर समवेयर पीपल हु हैव मिस्ड आउट दिस रेस. तो समवेयर जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट है, शायद से इट इज नॉट बीइंग हेल्पफुल टू देम, शायद से इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर देम. So now what I think these next 1 billion people can do is, जैसे मैंने थोड़ा highlight किया, कि they can try to understand this vernacular aspect of internet or this multilingual aspect of internet. So this is one area in which we can ensure that a lot of these people are connected on the internet. So that is the multilingual part. Second thing is, आज तक जैसे मैंने वही बताया, and it's a kind of a repeat of what I'm saying. Domain names और ये सब हमेशा बड़े-बड़े organizations like Amazon या education institutes या फिर आपके गवर्नमेंट्स लाइक इंडिया इन्होंने ही रखे थे. अगर आपको एक पैशन है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मुझे पाली लैंग्वेज का अगर पैशन है तो मैं एक .पाली डोमेन नेम करके इंश्योर कर सकता हूँ उसको अच्छा सर्च इंजन में प्रमोट करके कि जितने भी पाली रेलेवेंट लिटरेचर है, इट कैन कम ऑन इंटरनेट. सो समवेयर आई एम सेइंग दैट इंटरनेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज कॉमन्स. हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी की एक कॉमन्स होती है जिसमें वो अपना नॉलेज प्रिजर्व करते हैं. तो ये जो नेक्स्ट बिलियन पीपल है, समवेयर उनकी नॉलेज वो एग्जिस्टिंग कॉमन्स में आ नहीं रही है, जिसकी वजह से वो रिलेट नहीं कर पा रहे. तो मे बी अगर वो अपने खुद के नॉलेज कॉमन्स क्रिएट करे ओवर द इंटरनेट, so then even they will be included. So these are two main areas where the next 1 billion can be connected. The only caveat here is to still be connected to internet. आपको थोड़ा basic sense of communication, basic mathematical abilities, basic for the want of better term एक basic IQ and basic capability level लगता है. So, and there are obviously people जिनको who have not been that fortunate enough to even have that basic capabilities in place. So I think for government and education institutes, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत क्रिटिकल है कि आप हर एक जन को इंटरनेट पे डाल नहीं सकते. आपको उनको थोड़ा ट्रेन करना है, थोड़ा कैपेबल करना है और फिर ही उनको इंटरनेट पे डाल सकते हैं. एक क्लासिक एग्जांपल इज इन गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड. बच्चों को स्कूल से ही फेक न्यूज के अगेंस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ न्यूज इज फेक और नॉट. So these Scandinavian countries are kind of training their kids to identify this from a very young age. And as you all will realize, even to identify whether a news is fake or not, requires critical thinking skills, requires basic philosophical aptitude. Only then you will be able to do it. So these are three areas where I think people can work on. Dr. Kazi, do you want to add something to this? Oh, great. Okay. Thank you, Pratik, for answering the question. Okay, so thank you everybody for the questions and our speakers for their response as well as the session. Now I want to call Jigmet Dolkar to deliver the vote of thanks. Jigmet, can you? Am I audible right now? Yeah. Warm greetings, everyone. On behalf of ISOC India Mumbai chapter, I, Jigmet Dolkar, would like to extend my special thanks to our distinguished speakers, Dr. Syed S. Kazi and Mr. Pratik Pathak. I also extend my heartfelt gratitude to our generous sponsor, Yashash Sanduble,
and Mr. Tashi and Dr. Gyalsan from International Institute of Cultural and Ethics for their outstanding contributions and unwavering support for making this event a resounding success. I would also like to express our sincere appreciation to our esteemed event location partner, Central Institute of Buddhist Studies, for providing us with a beautiful venue and exceptional service. It has actually made it truly remarkable. I also extend my gratitude to the Additional Administrative Officer, Dr. Ivija, and Administrative Officer, Dr. Konchok Rigzin, for granting permission and providing with the full support for this event. Additionally, I would also like to thank all the dignitaries sitting over there. And also, I would like to express my gratitude to Ms. Nupur, President of ISOC Mumbai, Ms. Shweta, and Ms. Nandita, our advisory committee. And also, I cannot forget the names of Valentine, Kushagra, Hiram, Rupam, and Feroza for their design support, and Juisha, our Vice President, for moderating the session, and Narola for repertorying the event. Our coordinators, Ma'am Jigmet Lamule, Sir Jamyang, also deserve special thanks for their excellent coordination and support. I would also like to acknowledge our dedicated volunteers who made this physical event successful. Ms. Nilza, Ms. Desdan, Ms. Yangchan, and Mr. Dong. A special note of appreciation goes to the technical support, Jolly for all the support and live streaming the event, and also Stanzille and Ajo Gyalsanle for all their exceptional efforts in technical work. I would also like to thank all the attendees, students, and faculty members for their active participation. Your questions and your interactions have made this session enriching and engaging. It is your enthusiasm and curiosity that drive the success of such events. Thank you all for making this event a grand success. Now it's time for a final click. I request all the attendees to turn on your cameras, and I request Tanzali to pause the logical camera as well. And let's take a picture right now. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, and may God bless all of us. Thank you so much. Yes.